Today we'll see some traditions of men. ये परंपरा हम देखते हैं इधर हम क्या करता है, परमेश्वर का वचन साइड में रखता है और हमारा परंपरा वो मेन रखता है. So we'll see Mark 7:5. Then the Pharisees and scribes asked him, why walk not thy disciples according to the tradition of the elders, but eat bread with unwashen hands? Means they are asking Jesus, Yeshua. And he answered and said, well, hath Isaiah prophesied of you hypocrites, as it is written, these people honoreth me with their lips, but their heart is far from me. Means Isaiah is, in other words, Isaiah. Heart is their mind. They only honor with their words. This is what Jesus is saying. God has already spoken in the Old Testament that these people are only honoring me with their words. Their heart is far from me. It refers actually to Isaiah 29:13. Okay, where it says, therefore the Lord saith, for as much as these people draw near me with their mouth and with their lips do honor me, but have removed their hearts far from me. And their fear toward me is thought by the percept of men. This percept is the commandments of men. Their fear of me is taught by the commandments of men, not by God's law. म्हणतोच फारिजेवानी धर्मशास्त्रीनी ताचे लागीं विचारले, जाणटेंचे चाली परमोने तुजे शीत कित्याक चलनात, पूण मेल्या हातीन कित्याक जेवतात खातात. So, ताणे पोती पालून तांकां सांगले, हेजेसान तुमा दरोगीन विशीं आदींच सांगून दवरला. आधी सांगून दवरला ते आमी पळया मागीर आधी कितें सांगलां आतां पळय. ते सारके सारके तोर अशें बरोवन आसा. ही पर्द अनंताची म्हाका वाकाणटा, पूण तांचे खाली म्हजे जून पयस आसा. इसलिए फरीसियों और शास्त्रियों ने यीशु से पूछा, आपके शिष्य पुरखों की परंपरा के अनुसार क्यों नहीं चलते? वे क्यों अशुद्ध हाथों से रोटी खाते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, ऐसाया ने तुम ढोंगियों के विषय में ठीक ही भविष्यवाणी की है, जैसा कि लिखा है, वे लोग मुख से मेरा आदर तो करते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है. ये बोल रहे क्या, इसके परंपरा, मगर इसके परंपरा में हाथ धोने का है खाने के पहले. वो बोल रहे आपके शिष्य खाना खाते हैं बिना हाथ धो के. तू वाचला आयसाया 29:13. दोनयान मागीर अशें म्हणलें, हो लोक फकत उतरां घेवन म्हजेशी येता, फकत अनंतांनी म्हाका वखाणटा, पूण तांचे खाली म्हजेसून पयस आसा. तो कोत्ता ती म्हजी पुजा फकत मनशांनी घडलेल्यो कायद्यांची पाठ केल्ल्या शास्त्र्यांनी पुजा. आता देव कितें म्हणटा, ते तोंडानूच लागीं आहा म्हाजेशी,
काळजान ना ते मनशाचे घडलेले कायद्यांची पाठ केल्या शास्त्रांची पूजा. ते मनशाचे पाठ करता देवाचे न्हू. Howbeit, in vain do they worship me, teaching the doctrines and commandments of men. Okay? Howbeit, in vain. Vain is what? To no purpose. Do they worship me, teaching the doctrines, and doctrines is nothing but instructions. The commandments of men. Huh? The commandments of whom? Men. He's saying, for vain do they worship me, to no purpose do they worship me. Why? Teaching for doctrines and commandments of men. They are teaching men's doctrines. Uselessly they worship me. God is saying. हांव कितें म्हणटा तुम्ही तुमचे मनशाचे काणयो आयकता हे doctrines of the Catholic Church, men's doctrine, canon law, men doctrine. So what your God is saying, I'm stressing on this because of idolatry. Huh? So what God is saying, in vain, uselessly, to no purpose, you're worshipping me. Huh? Teaching for doctrines and commandments of men. तर मनशा केल्ले कायदे शास्त्रा कशी शिकून म्हजी पोलकी पूजा करता. पोलकी. मनशाचे पोतूनच तर मनशांनी केल्ले कायदे मनशांनी केल्ले कायदे शास्त्रा हे इस्रायली लोकूच न्हू पयली. इस्रायलीची आड हा ऑल ऑपोजिट. हांव तुमकां दाखयतलो फुडें. कांयच ना तेंचे एज पर इस्रायली लॉ. आनी तेंचे मनशाचे कितें मनशाचे कायदे मरे कायदे. शास्त्रा कशी शिकून ती म्हजी पोलकी पूजा करता. ये व्रत ही मेरी पूजा आराधना करते हैं हाँ. और ये जो शिक्षा देते हैं ये जो शिक्षा देते वे हैं मनुष्य के बनाए मनुष्य हुए के शिक्षा देते नियम मात्र. हाँ. मनुष्य के शिक्षा तुम लोग पालता है. मनुष्य के शिक्षा. मार्क 7:8. जेजू म्हणटा हे येशुआ रेड लायन तेन्ना रेड थोडे बायबलीन रेड हा मार्किंग ते जेजू उलयता. हे गॉस्पल वो अजून जितो हा जेजू. येशुआ अभी भी जिंदा है ये जो लिखा है. और ये जो लाल है ना वर्डिंग, लाल है शब्द, वो ये येशुआ ने बोला. हमको पता चलता है वैसा वो लोग लाल किया है. ये अभी लाल वर्डिंग है. फॉर लेइंग असाइड द कमांडमेंट ऑफ गॉड. यू आर लेइंग असाइड द कमांडमेंट ऑफ गॉड. You hold the traditions of men. Tradition is paradoxes in the Greek teachings, especially the Jewish traditionary law. You're holding the Jewish tradition, not even talking anything to do with Catholic. Catholic is out. ये कैथोलिक के बारे में नहीं बोल रहा है. ये जू लोग को बोल रहे हैं. ये कैथलिक नहीं था ये टाइम पे. ये कुछ कैथलिक नहीं था यहाँ. ये बोल रहे जुदाव लोग को बोल रहे. ये जुदाव लोग को सच वचन था उनके साथ. ये वचन से ये लोग और ये कर रहा था. वो बोल रहे तुम लोग पागल लोग, ये मनुष्य क्या ये कर रहे हैं. हाँ, तो अभी ये कैथलिक लोग किधर है? कुछ किधर भी नहीं है ये लोग. तुम्ही हुईत ना हे मॅपान हुईत ना तुम्ही. व जुदाव लोकांचे उलयता. तो म्हणटा तुम्ही वाट लायता म्हणटा जुदाव लोक हे मनशाचे हे कायदे पाडून. आणि म्हणजे कॅथलिक आणि आम्ही भायले लोक मरे. हम सब लोग बाकी का जेंटाइल्स वी आर हिदन पेगन. वी केम बिकॉज ऑफ येशुआ. and now you are bringing one religious system, man-made religious system, and you are saying this is the central universe. The Catholicism, as per what I heard, is universal. देवाची आज्ञा सांडून मनशांचे चाली तुम्ही देवाचे आज्ञा सोडून मनशाचे चाली तुम्ही पाळतात आणि त्यांका म्हणले आपली चाल सांभाळचे खातीर देवाची आज्ञा कुशीन काढून कितले म्हूण उशान तुम्ही. तुम लोग मनुष्य की चलाई हुई परंपरा बनाए रखने के लिए ईश्वर की आज्ञा टालते हो. 7:9. And he said unto them,
full well. Ye reject. Full well is honestly. Ye reject the commandment. In other words, this reject is awesome words in Hebrew. One is ye violate, one is ye de-esteem, disrespect. And other word is what? You neutralize. The commandment of God, that ye may keep your own traditions. You may keep your own paradoxes. Paradoxes is, the word of paradox is, one of the meaning is transmission. Transmission is what? The act or process of passing something from one person to another. Means in other words it is saying specifically the Jewish traditionary law. Means it is passed from one person to another. So he's saying you neutralize. In other words, he is saying you reject. In other words, you neutralize the word of God. You neutralize the commandment of God. That ye may keep your own traditions. You may keep your own paradoxes, your Jewish traditions or your transmission, the act or process of passing something from one person to another. यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग अपनी ही परंपरा का पालन करने के लिए ईश्वर की आज्ञा को रद्द कर देते हो. ये स्टोरी 2000 साल पहले का अभी भी चल रहा है. आणि तांका म्हणले, आपलीच चाल सांभाळच्या खातीर देवाची आज्ञा कुशीक काढूंक कितले म्हूण हुशार तुम्ही. 7:10 Yeshua example dita. For Moses said, honor thy father and thy mother, and whosoever curseth the father or mother, let him die the death. Okay, so he is removing from Exodus, okay, Exodus and Leviticus, where it says, in Exodus it says, honor thy father and mother, that thy days may be long upon the land, which the Lord thy God giveth thee. In Leviticus 29 says, for everyone that curseth his father or mother shall be surely put to death. He that curseth his father or his mother, his blood is upon him. Okay, he's basically removing the Old Testament. चोर मोजेसान सांगले, तुझ्या बापायक आणि आवयक मान दी आणि बापायक व आवयक शिरापता तो मरून वचून. एक्झाम्पल दिता येशुआ. तुम्ही म्हणता हिंगा मोझीस म्हणता. मोझीस म्हणजे कितें? मोझीस म्हणना लॉ, तोरा. त्यांना मोझीस म्हणता मीन्स इट इज अंडरस्टूड. They interchange Torah to Moses. When it is said Moses means the law. Torah is saying honor the father and mother. And whoso curseth his father and mother shall die the death. म्हणजे तोरा कितें म्हणटा? पण माय पाय राप घालता तांकां मरण फावो. क्योंकि मूसा ने कहा, अपने पिता और अपनी माता का आदर करो, और जो अपने पिता या अपनी माता को शाप दे उसे प्राण दंड दिया जाए. तो ये अभी एग्जांपल दे रहे हैं. तो हम देखते हैं एक्सोडस 20:12. तोरेस्परान तुझे देवान तुमका दिल्या देशान लांब आणि तुम्ही मोक्षाक तुमच्या आवय बापायक मान दिया. आवय बापायक मान दिया. अपने माता और पिता का आदर करो, जिससे तुम बहुत दिनों तक इस भूमि पर जीते रहो, जिसे तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें प्रदान करेगा. ये तोरा में लिखा है कि माता पिता का आदर करो. तो ये एक प्रिंसिपल है. उसको श्राप डाला तो आपको ही आता है वो श्राप. कोणी आपल्या बापायचेर व आपल्या आवयचेर शिराप घालतात, त्याचो जीव काढतो तो आपल्या मरणाचो जबाबदारी जातलो. यदि कोई अपने पिता या अपनी माता को अभिशाप देगा तो उसे प्राण दंड दिया जाएगा. Mark 7:11 says, but ye say, if a man shall say unto his father or mother, it is korban, that is to say a gift, by whatsoever thou might be profited by me, he shall be free.
Korban is what? It is a Hebrew word. It is not a Greek word. It is a Hebrew. They also have retained the word. Korban म्हणजे कितें? Consecrated present to the temple fund. Okay? Consecrated present to the temple fund. That is to say a gift. Okay? An offering. By whatsoever ye might be profited by me, benefited by me, shall be free. First we'll read what is that. Korban अभी क्या है बोल देखते हैं. पूण तुम्ही सांगतात कोणूय बापायक वा आवयक अशें म्हणटात जाल्यार म्हजी कोदले कितें तुका उपकारता ते हांवें कुर्बान केल्ले म्हणचे देवाक भेटयले. दोणे जो कोण माय पाय म्हणटा ना आम्ही कुर्बान केला म्हणजे आमकां तुका आतां पोवपाची गरज ना. कुर्बान हे कुर्बान कितें पळया. ओके. परंतु तुम लोग यह मानते हो कि यदि कोई अपने पिता या अपनी माता से कहे आपको मुझसे जो लाभ हो सकता है वह कुर्बान है तो उस 12 अर्थात ईश्वर की को अर्पित. ओके. तो ये कुर्बान क्या है देखता है. Matthew 27:6. And the chief priest took the silver pieces and said, it is not lawful for to put them into the treasury because this is the price of blood. ये treasury English word है, ये कुर्बानी है. ओके. बिकॉज इट इज द प्राइस ऑफ ब्लड. ये ब्लड मनी है, ये खून है, खून का पैसा है, ये नहीं डाल सकता है. सो मनी ऑल्सो इज अ कुर्बान. मनी पैसा भी कुर्बान है, सैक्रिफिशियल मनी, बट नॉट द एनिमल एंड दिस. वो भी है मगर ये भी हो सकता है, पैसा भी. ओके. कुर्बान. अभी ये क्या बोल रहे हैं यीशुआ? ये बोल रहे हैं क्या? यीशुआ क्या बोल रहे हैं? तुम लोग बोलते हैं माँ बाप को देखभाल नहीं करने का जरूरत नहीं क्योंकि हमने कुर्बान किया. कुर्बान मतलब क्या? मैंने ये पैसा डेडिकेट किया टेम्पल. ये पैसा मैं मंदिर परमेश्वर के मंदिर पे देने का सोचा है. हाँ. मुखेल यज्ञिकांनी ते नाणे काढून म्हणले नाणे सिक्के कॉइन्स नाणे काढून म्हणले ते देव मंदिराचे बांधकाम घालू न्हय. देव मंदिराचे कितें बांधन. हा बांदार. हे बांदार म्हणटा ते कुर्बान. हे तुका इंग्लिशान कळचें ना, कोंकणीन कळचें ना. एक्चुअली ते कुर्बान न्हू, ते ग्रीकान ते कुर्बान. ओके. Greek, actually Greek is using the same word korban from Hebrew. This word is not translated. It is kept like that only, korban. Actually it is a Hebrew word. Okay, korban. ते korban. korbanan घातले मागीर. एक्चुअली घालू न्हय ते रक्ताचे मोल. महायाजकों ने चांदी के सिक्के उठाकर कहा इन्हें खजाने में जमा करना हाँ, ये ठीक नहीं है. ठीक नहीं है. यह तो रक्त की कीमत है. ये रक्त की कीमत है. क्यों? ये यीशुआ को अंदर डालने का कीमत है. ये पैसा दिया है जुदास को, तो ये बोला ये रक्त का पैसा है, ये नहीं रख सकता है. तो ये कुर्बान ये एक शब्द है. लेविटिकस 1:2 कुर्बान यहाँ भी यूज किया. ओके. हांव वाचता. स्पीक unto the children of Israel and say unto them, if any man of you shall bring an offering. ये ऑफरिंग क्या है? कुर्बान. Unto the Lord ye shall bring your offering korban of the cattle of the herd of the flock. Means it is a blood offering. It can be blood or non blood offering. कुर्बान दो टाइप रहता है, एक रक्त का और दूसरा रक्त बिना. वो रक्त बिना क्या पैसा दे सकता है या हम आगे देखते हैं वो क्या हो सकता है. और ये रक्त है जो गाय दे सकता है, ये कुर्बान है. जो मदीच्या तंबून जावन चोरेस्पर मोजेसाक आपयलो आनी ताचे उद्देशी इस्रायल पोरचेक भेटे विशीं हे कायदे दिले. कोणूय एकलो जनवराची भेट करता तेन्ना ताची आपली गोरवांतली वा मेंढरा बोनकोळींतली विंचून काडुया. हाँ, जानवराचे भेट. कुर्बान. हाँ, कुर्बान ते शब्द हिंगाच्यान येता. हाँ. जब तुम में कोई प्रभु को चढ़ावा अर्पित करना चाहे तो वह ढोरों या भेड़ बकरियों के झुंड में से कोई पशु ले आ सकता है. चढ़ावा
ओके सो हे कोरबान अभी नंबर्स अभी हे पैसे एक झाले एक जानवराचे रोगताचे झाले आणि किती हा ते कोरबान ते पळया नंबर्स 5:15 Then shall a man bring his wife unto the priest, and he shall bring her offering for her. Offering here is korban. The 10th part of the ephah of barley. Ephah is the measuring of barley. Barley is nothing but grain. Okay? Meal. He shall pour no oil upon it, nor put frankincense thereon. For it is an offering of jealousy, an offering, a memorial, bringing iniquity to remembrance. Iniquity is nothing but for sin remembrance. So here what it is saying, Korban is barley offering, a corn offering. Okay, there we saw animal offering, then we saw money offering. Okay, so it is blood money and non-blood money also. कोशेही ते जावं पोती ते बायलेक अदनिकीशी घेऊन वेतलो ठरवलेले दान 2 रात बाजऱ्यांचे पीठ पून तातून तेल मिसळून करचो ना अदूम घालचो ना कित्याक ते सोत उजवाड्याक हाडचे खातीर दुबवले गवचे दान. तो वह अपनी पत्नी को याजक के पास ले आए और उसके लिए चढ़ावे के रूप में 2 सेर जौ और मैदा भी लाए. चढ़ावे कुर्बान है और वह चढ़ावे पर ना तो तेल डाले और ना लोबान ही रखे, क्योंकि वह ईशा की अन्न बलि पाप का स्मरण दिलाने वाला चढ़ावा है. हाँ, तो ये अभी क्या हो गया, एक पैसा का है, एक जानवर का है और एक बाकऱ्योची ऑफरिंग. हाँ, हे सगळे कोरबान. आता हांव कित्याक थिंगा गेलो, आता पळय हिंगा कितें जाता न्हू, जेजू कितें म्हणूंक सोदता हिंगा कोरबान हांव गेलो पळोवपाक कितें हें. आता पळय हांवें रिसर्च केला नेटार. Internet. A person might simply say, be it korban or it is korban regarding his property or some part of it. Okay? म्हणजे कितें एक मनीस म्हणूंक जाता हे माझे भाट ओ हे माझे घर कोरबान म्हणजे कितें आता पळय आयक. Pharisees at that time thought that once a person declared his possession to be korban or a gift dedicated to God, he could not use these to satisfy the needs of his parents. म्हणजे हे फारसी कितें म्हणूंक लागले, आता तू समज म्हणला हे माझे घर कोरबान म्हणजे हे आता घर तू तुझे माय पायक राखून जायना ते घरान. एक बार तुमने बोला, ये फारसी क्या बोला, इनको क्या सिखाया, एक बार तुमने कोरबान बोला, ये समझ मेरा घर कोरबान है, मतलब ये मंदिर के लिए, ये यीशुआ के लिए, परमेश्वर के लिए. हाँ, तो मेरा पिता माता का देखभाल नहीं कर सकता है वो घर में, वो कोरबान है बोल सकता है, ऐसा बोल सकता है. हाँ, तो he could not use this to satisfy the needs of his parents, however needy they might be. Okay, though he could make use of such possession himself until his own death if he chose to do. मतलब ये क्या, अगर उसका माँ बाप का उसको जरूरत पड़ा ये घर का रख नहीं सकता, मगर ये क्या कर सकता है, ये कुर्बान बोल सकता है वो मरने के बाद. ये बेटा जो है कुर्बान बोलता है वो मरने के बाद दे सकता है, मगर ये माता पिता समझ बराबर नहीं तो उसको कुर्बान ये नहीं रख सकता है, उनको बाहर फेंकने का. ऐसा ये लोग सिखा रहा था वो कुर्बान के बारे में. ये कुर्बान ऐसा नहीं है. तो thus although these Pharisees prophesied to honor God, their hearts were not in accord with these righteous requirements.